Good morning, class. Today we will discuss tribe, nomads, and settled communities. In this chapter, we will read about the tribal people who live in remote region, and nomads, generally the people who are not settled at one place, and settled communities after like learning agriculture, how the people used to live at settled places. So let's take the chapter. As we know that in second, third chapter, fourth chapter, we have read about the kingdom, how they rose, and even as this was happening, new artisans and production activities flourished in towns and villages. Over the centuries, important political, social, economic developments had taken place. So social changes was not the same everywhere because of different kinds of society evolved differently, and it is important to understand how and why this happened, why the development took place differently. On the reason we'll see, in the large part of subcontinent, society was largely so that it was already divided according to the rules of varna. Varna we read last year, that is Brahmin, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. So were accepted by the rules of the large kingdom, means whatever the rule regulation were there, accordingly they had been settled. So under the Delhi Sultan and Mughals, this hierarchy between social classes grew further. तो धीरे धीरे जैसे रूलर्स आते रहे, according to that basis the development took place. So there were, however, other kinds of societies as well. Many societies in subcontinent did not allow the social rules and rituals so prescribed by the Brahmins, and nor were they divided into the numerous unequal classes such as society are often called tribes. तो यहाँ पर जहाँ पर कोई पर्टिकुलर रूल रेगुलेशंस जो है वो इनके अनइक्वल, मतलब एक जैसे नहीं होते, डिपेंड करता है उनकी सोसाइटी पे, तो यही ट्राइबल्स हैं. मेंबर ऑफ ईच ट्राइब्स वर यूनाइटेड बाय द किनशिप बॉन्ड्स. किनशिप कहते हैं नाती रिश्तेदार, जो भी रिलेटिव्स हैं. मैनी ट्राइबल्स ऑप्टेंड देयर लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर. ठीक है, सबका मेनली जो प्रिमिटिव प्रोफेशन जो रहा है दैट वाज एग्रीकल्चर, अदर देन हंटर गैदरर्स और हर्डर्स. दूसरे होते हैं हंटर गैदरर्स, एज वी रेड इन हिस्ट्री लास्ट ईयर. हंटर हु यूज टू हंटिंग एंड गैदरिंग the food and live with their herd or cattle. Most often they combine these activities to make full use of natural resources of the area in which they lived. And some tribes were nomadic and moved from one place to another. A tribal group controlled land and pasture jointly and divided these amongst household according to their rules. सो ट्राइबल ग्रुप जो थे वो अपने हिसाब से लैंड और पास्चर, पास्चर का मतलब है ग्रास लैंड वेयर दे ग्रेज देयर एनिमल जॉइंटली. वो कभी कभी शेयरिंग में भी होता था और सेपरेटली भी उनकी अपनी एक एरिया होता था, तो वो डिवाइड करते थे हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स, जैसे कि उनके पर्टिकुलर एरिया के रूल रेगुलेशंस होते थे. सो मैनी ट्राइब्स थ्राइव्ड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. इफ़ यू सी द ट्राइब रिलीजन इन इंडिया फ्रॉम साउथ टू north and east to west, we can find different kind of tribal groups in our country, and they usually lived in forest, hills and desert places difficult to reach. ज़्यादातर वो फार रीचिंग एरिया में रहते हैं जहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, क्योंकि उनके अपने कस्टम और अपने ट्रेडिशंस होते हैं. तो समटाइम्स दे क्लैश विद मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़, एंड इन वेरियस वेज द ट्राइब्स रिटेन their freedom and preserve their separate culture. और वो अपनी सेपरेट कल्चर, मतलब अपनी ही कल्चर को प्रिजर्व करके रखते हैं, उनके अपने ही रीति रिवाज होते हैं. ठीक है. सो इसके बाद हमारे पास आता है हु वर द ट्राइबल पीपल. ट्राइबल पीपल कौन थे? तो ट्राइबल पीपल, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रेवलर्स गिव अवे स्कैंटी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स. अ फ्यू एक्सेप्शन पार ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड्स. ये हमें पता है कि उनके पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होते थे, एजुकेटेड नहीं होते थे, दे बिलीव इन नेचर एंड लिव लाइक natural people you can say, but they preserved rich custom and old oral tradition. लेकिन जितना भी मिला है वो oral ही उनके बारे में सुनाई और दिखाई देता है, and these were passed down to each new generation.
और यही क्या करते हैं वो, दे पास टू जनरेशन, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. So present day historians have started using such oral tradition to write the tribal history. आज क्या हो रहा है, आज की जो मतलब अगर हम कहें हिस्टोरियंस जो भी उनको मिल रहा है उनकी ट्रेडिशन ओरली वो रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं उनके बारे में. तो ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ अवर सब कॉन्टिनेंट एंड द एरिया एंड इन्फ्लुएंस द ट्राइब वेरीड at different points of time. Some powerful tribes control the large territories in Punjab. The Kholkar and tribe was very influential during 13th centuries, and later the Ghakkars became more important and their chief Kamal Khan Ghakkar was made noble. तो Mansabdar by Emperor Akbar, and in Multan and Sindh the Langhas and Arghans dominated extensive region before they were subdued by the Mughals. The Balochins were another large powerful. So these were the tribal groups, and these tribes were used to live in north, west, and they were divided into many similar clans. Clans का मतलब उनका group ही है under different chiefs. And the western Himalayas, they lived in Shepherd tribes and Gadis, and distant northeastern part of subcontinent region too was entirely dominated by the Nagas, Ahoms mainly. And in many areas present day we can talk about Bihar, Jharkhand, Chero kingdoms was emerged by the 12th century. Raja Man Singh, Akbar's famous general, attacked and defeated the Cheros. In 1591 a large amount of booty was taken from them. Booty मतलब जितना भी उनका प्रॉपर्टी का जो भी मतलब वॉर के बाद, जो बैटल के बाद, जो भी उनका विक्ट्री के बाद जो उनको मिलने वाली प्रॉपर्टी थी वो सारी किसकी हो जाती थी, द किंग हु गॉट विक्ट्री ओवर द ट्राइब. So under Aurangzeb, Mughal forces captured many Cheros fortresses and subjugated the tribe. Subjugated का मतलब है उनको फिर कंट्रोल कर लिया उन्होंने. Mundas and Santals were among the other important tribes that lived in the region, and also Orissa and Bengal. Now the Maharashtra, Highlands and Karnataka were home of Kolis, Berats and numerous other. Kolis also lived in many areas of Gujarat. Further south were a large tribal population of Korangas, Vetras, Marwars and many other. यहाँ पर आपको ये सारे ट्राइबल्स के ही नाम मिलेंगे, किस किस रीजन में कौन कौन सी ट्राइब्स थी. सो द लार्ज ट्राइब्स ऑफ भील्स वर spread across the western and central India. By the late 16th century, many of them had become settled agriculture and even जमींदार. अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हम कहीं ना कहीं हम भी किसी न किसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं. दो इट गॉट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि आज हम सिविल्ड हैं, वी आर लिविंग इन सिटी एंड टाउन्स, बट कहीं ना कहीं हमारा एग्जिस्टेंस भी किससे है, all these tribals से. So many Bhil clans and nevertheless remained hunter-gatherers, and the Gonds were found in the great number across the present days of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra and Andhra Pradesh. So in next video we will see how nomads and mobile people lived.